हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईआईटी जैम 2013 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। 1 to 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इस वीडियो में हम लोग 11 to 20 फिल इन द ब्लैंक्स आया था। उस साल 2013 पेपर बिल्कुल अलग था, मतलब 2012 तक इन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया, 15 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव। फिर 2012 के बाद ये लोग R&D करना चालू किए पेपर का पैटर्न में। तो 2013 में बिल्कुल अलग था, 2014 का पेपर भी अलग था, 2015 में जो पेपर दिया उन्होंने उसके बाद वो फिर कंटिन्यूसली अभी तक वही चलता आ रहा है। ठीक है, 13-14 का पेपर बिल्कुल अलग ही था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 11 to 20 जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो भी रिलेवेंट है, काफ़ी रिलेवेंट। तो देखो सब्जेक्टिव भी है, बट अभी अब लास्ट में जाके सब्जेक्टिव हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव करने से ना थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। कहाँ गया ये रहा। ये देखिए 2013 का पेपर कर रहे हैं हम लोग, 11 से 20 और फिल इन द ब्लैंक्स। दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी जेड एक्स वाई प्लस एक्स जेड डी एक्स प्लस वाई जेड डी वाई इक्वल टू 0 इज। करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, डी जेड, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। यहाँ पे ये क्लियर है कि z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, राइट। z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई। ये हो जाएगा वाई जेड डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस विल बी डी जेड बाई जेड दिस। और इसको आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या आएगा, log z एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c, और यू कैन से log z is c minus, or you can say z is c dash e to the power this। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द सॉल्यूशन। क्लियर है? आगे चलें। 12वां क्वेश्चन, 11वां कर लिया हम लोगों ने। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, given that f1 equals to 1, f dash 1 equals to 1, f डबल डैश इक्वल टू 1, मतलब 1 पे फंक्शन का वैल्यू और उसका दो डेरिवेटिव का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, f1/2, f1/2 कैसे करोगे। यू कैन यूज टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम होता ही इसीलिए है, यू कैन फाइंड द function and its behavior. It tells you about the function and its behavior at any around in the neighborhood of any point. Basically it tells you regarding the function and its behavior at in the neighborhood of any point in the domain. आपको क्या निकालना, आपको 1 पे सारा वैल्यू दिया हुआ, 1/2 पे निकालना है। तो f1/2 क्या लिख सकते हो, f1/2 is what, f 1 minus 1/2 है कि नहीं। टेलर्स थ्योरम ये होता है, एफ ए प्लस एच इज एफ ए एच एफ डैश ए एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी f1 एंड ये हमारा a है और h हमारा -1/2, राइट। तो h इज -1/2, f डैश 1 एंड -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और 2 फैक्टोरियल 1/8 हो जाएगा। आगे का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास डेटा नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आ पाएगा। तो f1 क्या आ रहा है तुम्हारा 1, f डैश 1 इज ऑल्सो 1, f double dash is also 1, so this is what, 8, 2 चौके 8 प्लस 1, 9 में से 4 गया 5,
5 बटा। So F1/2 is 5/8. F1/2 is 5/8, ठीक है। F1/2 जो होगा 5/8, ठीक है। तेरहवां क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए 13th क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सब कुछ। Two tubes A and B are connected to another tube C. A mercury manometer is connected between B and C, ठीक है। The diameter of B and C are 0.04 and 0.01. Okay. An incompressible fluid of density 10 to the power 3 kg per meter cube enters A and leaves B with a constant speed of 0.2 meter per second. If the density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube, the height h of the mercury column in manometer is. B पॉइंट पे आपका जो डायमीटर है दिस इज 0.04 मीटर, और यहाँ पे जो डायमीटर है दिस इज 0.01 मीटर, ठीक है। ऑफ कोर्स प्रेशर एट बी विल बी मोर, ये देखो मरकरी को ज़्यादा दबा रखा है, ऐसे भी वेलोसिटी यहाँ कम होगा तो प्रेशर हाई होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज वी कैन अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन at point, say I call this point as P and I call this point as Q, ठीक है। Of course they are the diameter is very small, so I can say they are at the same level, right? Yeah, the same level. So at point P, or let's call it M and N, not P and Q. Let's call this point M and this point N, right? So at point M, the pressure energy will be Pm, right? And the kinetic energy per unit volume is basically Bernoulli equation में क्या करते हो? You consider the motion of 1 unit volume of the fluid along a streamline. M and N are the points on the streamline, and as this 1 unit volume of the fluid moves along the streamline, it just conserve the energy associated with 1 unit volume of the fluid. So what are the energy associated with 1 unit volume of the fluid? 1 unit volume of the fluid is interacting with the surrounding fluid, so that energy is given as pressure energy. तो 1 unit volume है तो pressure energy will be P only, right? Static pressure जिसको बोलते हैं। You have the kinetic energy. So kinetic energy of 1 unit volume of the fluid is simply half rho v square, because mass of 1 unit volume is rho, and the gravitational P, which is energy of interaction which that 1 unit volume of the fluid has with the gravity, rho gh, because mass of 1 unit volume is rho, right? So here I am considering M and N to be on the same level, so gravitational P is going to be same for M and N when the fluid is at M and when the fluid is at N. So half rho Vm square, and pressure at N plus half, right? They have given you velocity at point B, which is nothing but 0.2. So let's find velocity at point M. So velocity at point M and velocity at point N. So what we can do is we can apply equation of continuity. Rho A V is constant. So what is the area of cross section at point M? It is going to be pi and 0.01 upon 2 का whole square. Rho A V at point M is equal to rho, area is pi
and the radius will be what, 0.02. So it will be 0.02 का whole square and V at point M. So V at point M is going to be simply what? This will cancel out, this will cancel out. So what you will have, 2 into 10 to the power 4 minus 4, और इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, this 10 to the power minus 4, and Vn is V. Vn is V, which is 0.2. So this will all cancel out. 4 दूनी 8 दूनी 16, सही बन रहा है ना, रो ए बी, 2 दूनी 4, नहीं, एक 4 यहां से भी आ रहा है ना, सॉरी, पीएम इज, एक तो 4 यहां आ गया -4, और वी इज 0.2, इधर से क्या आएगा, एक 4 आएगा, एक टेस्ट पर माइनस पर आएगा, चचो का 16 दूनी 32, 3.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. So here it is 0.2 meter per second, but here the velocity is going to be, here the velocity is 3.2 meter per second. Right, okay. So of course the velocity here is less, so static pressure should be high, because static pressure plus kinetic energy is going to be constant. Okay. So I can say that Pn minus Pm is half right. So the pressure difference is what? Pressure difference will be equal to this, right? ये जो है ना H, मरकरी का वो भी दे रखा है आपको, डेंसिटी. So it is equal to density of the mercury rho Hg into G into H equals to rho of the fluid. So I want H, na? I want H. So H is what? H is half. What is rho? Rho क्या है? 10 to the power 3. Vm square is 3.2 का whole square, and this is 0.2 का whole square, upon Hg का हो गया 13.6, ये आ जाएगा. So this will cancel out. क्या आ जाएगा बताओ? 1/136 गुना 2, 272, और 32 10, 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 64 और 96, 9 6, क्या लिखना है? 32 64, अच्छा 6 6 12, 1024. So 3.2 का होल स्क्वायर इज 10.24 minus 0.04. This is 10.2 मीटर, है ना? So 10.2 upon 272.
आंसर चेक कर लो थोड़ा सा, मतलब एक बार रिवाइज चेक कर लेते हैं। 10.2 ठीक है, रो इज 10⁻3। ओके, हाफ रोज इज 13.6, 13.6 नीचे आ गया, ठीक है। हाँ, ठीक। सो 10.2 भागा 272, यस, आंसर इज कमिंग टू बी 0. तो अगर mm में बात करें तो इट विल बी 37.5 mm, 37.5 mm, ठीक है। ठीक है, 37.5 मिलीमीटर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन किए ना जी, यही बात की। अब 14th क्वेश्चन करना, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। The path of particle of mass m moving under influence of central force in plane polar coordinate is given by r equal to r naught e to the power k theta, where r naught and k are positive constant of appropriate dimension. The angular momentum of particle is L, its energy is 0. The potential energy function V r in terms of m, L and k is, कैसे करोगे भाई? एनर्जी दे रखा है तुमको, एनर्जी क्या होता है? सेंट्रल फोर्स मोशन पढ़े होंगे आप लोग, इट इज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल, दोनों इफेक्टिव पोटेंशियल हो जाता है, एंड रेडियस k, एंड दिस इज गिवन टू बी 0, राइट। सो दैट मीन्स सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल वी आर जो पूछ रहा है तुमसे, सो दैट विल बी माइनस okay, L is what? थीटा डॉट, R क्या हो जाएगा? So dr by dt ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका d by d theta of so I can say this is equal to theta dot, and theta dot is L by mr square. So this is what? kr, ये r naught e to the power k theta तो r ही हो जाएगा ना, so this is L upon KL upon mr, है ना, r dot is KL upon mr, ये लिख दो यहाँ पे, so this is minus L and this is half and this is k square L square, right. So this is minus L square upon 2mr square, and minus m will cancel out, so it is k square L square 2mr square. So this is L square upon k square, sorry, ये आपका सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल,
माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्चुअली नेचर का दो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स जो है ना वो सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशन और कूलम्बिक, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल फेनोमेना समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके फाइन, ये क्या बोल रहा है भाई, द डायमेंशन ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ refractiveness n are shown in figure, ठीक है। Radius of curvature of the lens in terms of n, h and delta, देखो जो फोकल लेंथ होता है ना, that is expressed as in terms of radius of curvature। R1 होता है इसका radius of curvature, R2 होता है दूसरा फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो लेफ्ट फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव लेंगे, राइट फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो राइट फेस का रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा और सेंटर से, और लेफ्ट साइड फेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट साइड में लाई करेगा। तो इसलिए लेफ्ट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेते हैं और राइट फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेते हैं। और थिन कॉन्वेक्स लेंस है तो मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक है, सॉरी एफ ये नहीं है, सॉरी 1/f है। सो दिस इज n minus 1, R1 is say 1, this is phase 2, R, and this R2 is minus R. So this is okay. How to find focus, focal length? See, focal length कैसे निकालोगे? In terms of given data, if your parallel is coming, parallel is hitting this face, hit this, it will bend, it will pass to focus. ये property है convex lens का. If the parallel is hitting the lens, the ray after refraction will pass to the focus. So this is going to be your focal length, right? Let's call this as theta. Now I can say that theta, tan theta is h by f. H by f. Yeah. Delta is very small. See, you know one thing, when the lens is thin lens जब होता है ना, so for thin lens the focal length is very high, because thin lens का जो radius of curvature होगा वो बहुत large होगा। मतलब देखो ये लेंस है, इसका radius of curvature ऐसे प्रोड्यूस करोगे तो ये radius of curvature हो जाएगा, लेकिन अगर लेंस थिन होगा तो ये बढ़ाओगे तो ये बड़ा बनेगा ये, तो radius of curvature will be high, so f will be high. So for thin lens the focal length is very high, right? Focal length is very high. H will be very small compared to focal length. H कितना होगा, मतलब 15 mm, 20 mm, 25, 30 mm, और ये मतलब मीटर्स में जा सकता है if the lens is very thin. So this is going to be very very small. So in that case theta would be very small, and when theta is small, tan theta is theta. Tan theta is theta when theta is small. And we can find this theta by using the formula which we have for the prism. I can say that this can be taken as what? A prism kind of thing. And suppose this angle is phi, angle of the prism. So theta is what? Theta is the angle of deviation. And angle of deviation is given by n minus 1
into angle of prism. Angle of prism phi will be what? Delta by h. Delta by h. Is it not? So from here what do we get? 1 by f as this. So 1 by f is going to be n minus 1 delta by h square. So n minus 1 will cancel out. So r is going to be 2h square upon delta. समझ में आ रहा है? Yes. 2h square upon delta. Delta is very small compared to h, so this phi equals to delta by h is valid. When phi is very small, phi is delta by h. ठीक है, ऐसा चेक. ओके, ठीक है. 16वां क्वेश्चन देखिए. स्क्रीन क्वेश्चन. ये लॉरेंस फोर्स का क्वेश्चन लग रहा है हमको. क्या बोल रहा है? A charged particle of mass m, charge q and constant velocity v enters a uniform magnetic field B equals to B naught I cap at an angle theta to the direction of magnetic field. Find the angle theta if one revolution of helical motion the particle advances along the direction of magnetic field a distance equal to radius of the helical path. अच्छा, करते हैं इसको थोड़ा. देखो, suppose this is your x axis, this is y axis, and the magnetic field is lying in this direction. B is B naught I cap. अब velocity क्या है? It is it enters the magnetic field. Suppose first quadrant is the region or the right side of this y-axis is the region where you have this constant magnetic field. So suppose the particle enters into this region at the origin. So this is V, and it makes an angle of what? Theta. At an angle theta to the direction of magnetic field. Yes. It enters, make an angle theta with the magnetic field, right? So you will have what? I can have this velocity will have two component. V will be V cos theta I cap and V sin theta j cap. So the Lorentz force will be Q V cross B, and this is what? V cos theta I cap and B is what? B naught I cap. So I cross I is 0. So you have what? Q V B naught sin theta, and J cross I is what? V cross B is inward. V cross B is inward, right? So in a way, अगर ये मान लो velocity ऊपर का डायरेक्शन होता ना, so it would have undergone a circular motion like this. The y direction होता तो it would have undergone a circular motion like this. लेकिन velocity का एक component magnetic field के along है, x के along भी है, तो क्या होगा? It will undergo a circular motion and simultaneously it will keep on moving in x direction also. With what velocity? With velocity equal to v naught cos theta. With velocity equal to v cos theta. So a circle plus linear motion superimposed on one particle is what? It's helical motion. A circular motion,
the superposition of a circular motion and the linear motion perpendicular to the or parallel to the axis of circle, axis passing through center of circle, it will give rise to what? A helical motion, helical motion. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग we can find the radius of this helix. This is equal to mv square by r. So from here I get the radius. V cancel out. So you have what? The radius is mv upon qb naught sin theta. mv upon qb naught sin theta. This is radius. अब क्या बोल रहा है? जब एक सर्कुलर मोशन होता है, वन रिवॉल्यूशन ऑफ हेलिकल मोशन, तो पार्टिकल जो है एक्स के लॉन्ग इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ आर. ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब पहले तो हम लोग एक काम करें, इस यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकालना. ठीक है, यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकालना, द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन. तो ये क्या हो जाएगा? मतलब समझ लो ना. ठीक है, yeah. So time period of circular motion will be what? The velocity which is tangential to the circle is v naught sin theta, right? V naught sin theta, v sin theta, sorry. So this will be from here I get what? Sorry, I think I have committed a mistake. Sorry. In fact, let's take it as a v parallel and let's take it as v perpendicular, right? So, we have committed a mistake. This is v perpendicular. This is a qv perpendicular b naught, right? So, in fact, when I apply the radial equilibrium condition, this will be mv perpendicular square by radius r, right? So r is going to be mv perpendicular upon qb naught, right? And if I want to find the time period of circular motion, then omega is what? V perpendicular by r. So this is nothing but qb naught by m. And time period will be, ये सब पढ़ते हैं हम लोग ना लॉरेंज फोर्स में, इट इज 2 पाई m by qb naught. और इस एक टाइम पीरियड में द डिस्टेंस ट्रेवल along x axis will be what? v cos theta into this time period, and this is equal to r, right? So this is v cos theta and this is 2 pi m by qb naught qb, and this is equal to r. R is what? R is mv perpendicular. V perpendicular is v cos theta, sorry, v sin theta upon qb naught. So this cancels out, right? This cancels out, v cancels out. So you have what? This cancels out. So we have tan theta equals to 2 pi. So theta is what? Theta is tan inverse 2 pi. So let's calculate this. Let's calculate this. Tan inverse 2 pi. This is 80.95, yeah, 96 degrees. 80.96 डिग्री. ठीक क्वेश्चन था, मतलब शुरू में लोग एरर कर रहे थे इसमें. You must understand this. मतलब हर एक साल बीच का क्वेश्चन आ रहा है इस पे, समझ रहे ना, लॉरेंस फोर्स पे. ओके,
देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. Two thermally isolated identical system has heat capacity which vary as Cv equals to beta T cube. Initially one system is at 300 Kelvin and the other is at 400 Kelvin. The systems are then brought into thermal contact and the combined system is allowed to reach thermal equilibrium. The final temperature of combined system is, एक सिस्टम आपका A हो गया और एक सिस्टम B हो गया, and they are in contact site. So when suppose they reach equilibrium, they will reach equilibrium at some temperature T in between 300 Kelvin to 400 Kelvin. So in a way, the heat which is if this is A is say at 300 Kelvin and B is at 400 Kelvin. So when you keep them in contact, when you bring them in contact, A is going to gain heat and B is going to lose the heat. So heat gained by A will be equal to heat lost by B. Heat gained by A will be equal to heat lost by B, right? So अगर हम लोग साइन कन्वेंशन साथ में लें, so I can say QA plus QB would be 0. Why? Because QA will be positive and QB will be negative. Heat is lost by B, so sign convention use करें तो QB will be negative and QA will be positive. How come? See, QA is what? QA is CV dt and they reach the final temperature T, so it is 300 to T, right? And QB is CV dt and this is 400 to T. So of course this will be negative and they will add up to 0. That means heat lost by A is, heat gained by A is equal to heat lost by B, right? Same thing I can write like this. Okay. And Cv is not constant, it is a function of temperature. So it is beta T cube dt plus beta T cube dt equal to 0. Right? So in a way, T4 minus 304, ये बीटा F4 तो राइट हैंड साइड में जाकर 0 हो जाएगा और ये लिमिट बैठाओगे तो क्या बनेगा T4 माइनस, so I can say 2T4 is 304 4, or I can say T is 3 3 9 3 27 थे 81 और 2 दूनी 4 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 अपॉन 2 1/4 इंटू 100 पे 5 4 तो बाहर ही निकल जाएगा ना जी. अब इसको निकालो वैल्यू क्या आएगा. We'll have 256 plus 81 भागा 2 168.5 168.5 to the power 0.25. So it is 360 Kelvin. It is 360 Kelvin. ठीक है? It's going to be 360 Kelvin.
ओके, 18वां क्वेश्चन करना है हम लोग। ये 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The beam of X-ray of wavelength 0.2 nanometer is incident on a free electron and get scattered in direction with respect to direction of incident radiation, resulting in maximum wavelength shift. The percentage energy loss of the incident radiation is, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इंसिडेंट एक्सरे है, ये स्कैटर्ड वाला हो गया, ये लैम्डा है, ये लैम्डा डैश है, and suppose this is phi. So from the Compton effect we have lambda dash is equal to lambda plus h upon m naught c right. So this is 0.2. अब ये wavelength shift maximum कब होगा? When this is maximum and this is maximum and this is minimum. So cos phi का minimum value क्या हो सकता है? -1 when this phi is pi. So lambda dash max when this is Compton shift. When Compton shift is maximum, lambda dash will be maximum. That will be equal to lambda and cos phi is -1. So 1 minus -1 is 2. 2h by m naught c. लैम्डा आपका 0.2 नैनोमीटर है, सॉरी, प्लस ट्वाइस गुना 4 पॉइंट क्या होता है 2.426 पिकोमीटर। तो दोनों का अगर नैनोमीटर में कर दो क्या आ जाएगा? 0.2 प्लस ये हो गया 26 दूनी 52, 24 दूनी 48 पॉइंट। अब पिकोमीटर करोगे तो 2 0 यहाँ पे ये हटा दो, ठीक है। तो दिस विल बी 0.204852 nanometer. So percentage energy loss will be what? Percentage energy loss will be how much? SC by lambda minus SC by lambda dash. तो जितना एनर्जी कम हुआ वही लास्ट एनर्जी लास्ट हुआ ना, दैट मींस एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन अपॉन SC by lambda, ठीक है। तो इनिशियली एनर्जी कितना हो जाएगा जी? देखो परसेंटेज एनर्जी लॉस विल बी इनटू 100 ऑफ कोर्स। SC इज दिस विल बी व्हाट? 1 by lambda minus 1 by lambda dash 1 by lambda, right? So this is lambda dash minus lambda lambda dash into lambda. So this will cancel out. Lambda dash minus into 100, right? So this will be simply lambda dash minus lambda is 0.004852 upon lambda dash is 0.204852, ठीक है, into 100 ऑफ कोर्स। क्या आ जाएगा? 0.004852 भागा 0.20 into 100. So it is into 100. So percentage will be 2.2 decimal place.
ऐसा 2.37, एक बार थोड़ा मिलाते हैं आंसर ना इसका, 2.37 ठीक है आंसर, ठीक है। सो 2.37 इज द परसेंटेज of energy loss, right? Is the percentage of energy loss. Okay. 19th question देखो क्या बोल रहा है. The free particle of mass m is confined to a region of length L. It's a particle in one dimensional box. The de Broglie wavelength wave associated with particle is sinusoidal in nature and is given like this. The energy of particle is, simple question है. For particle in one dimensional box, your sin is given by what? Under root 2 by L sin n pi x by L. तो अगर वेवलेंथ वेव इसको प्लॉट करोगे, if you plot this psi with respect to x, then the first psi 1 will be plotted as this simply. जानते भी होंगे आप लोग. psi 2 is plotted like this, sorry, मतलब जितने psi 3 is plotted like this, जो दिया हुआ आपको. So this is nothing but psi 3. So energy associated will be E3 simply. Energy क्या होता है? En equals to n square pi square h cross square. So n equal to 3 पुट करोगे तो हो जाएगा 9 pi square h cross square upon this. ठीक है? ये आ जाएगा. This will be E3. Okay. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. अरे एक्चुअली ना ऑफलाइन पढ़ाने का मजा ही अलग है. तो बच्चा लोग रहता है इंटरेक्शन. ये स्टूडियो में पढ़ाना ना बहुत टायरिंग होता है. मतलब यहाँ ऑफलाइन का 4 घंटे पढ़ाना, स्टूडियो का 2 घंटे पढ़ाना बराबर है. ठीक है. एनीवे पता नहीं, हमने तो ऑफलाइन अब नहीं पढ़ा रहे. ओके देखो 20th क्वेश्चन. The variable power supply 5 volt to 20 volt is connected to a Zener diode specified by breakdown voltage of 10 volt. The ratio of maximum power to the minimum power dissipated across load resistor is. देखो भाई, जीनर ब्रेकडाउन होने के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज मतलब 10 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, तब जाके जीनर ब्रेकडाउन होगा. तो कहने का मतलब ये है कि 5 वोल्ट ये रहेगा तो कभी भी इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट से ऊपर जा ही नहीं सकता है. सो इन दैट केस योर जीनर ब्रेकडाउन विल नॉट बी इन रिवर्स बायस कंडीशन. ठीक है. तो अगर 5 वोल्ट रहेगा तो करंट विल सिंपली फ्लो लाइक दिस. 20 वोल्ट पे जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट चाहिए, तो यू विल हैव जीनर ब्रेकडाउन एट 20 वोल्ट. ठीक है. तो VI मैक्स जब रहेगा 20 वोल्ट तब तो जीनर ब्रेकडाउन होगा. ठीक है. अच्छा, जीनर ब्रेकडाउन जब होगा तो क्या होगा? I ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, IZ आई हो जाएगा IL. 20 वोल्ट पे यू विल हैव जीनर ब्रेकडाउन, राइट. सो व्हेन यू हैव जीनर ब्रेकडाउन एट 20 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी क्लैम्प्ड टू VZ. वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी क्लैम्प्ड टू VZ. VZ के जो लोड है, लोड रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस वोल्टेज क्लैम्प हो जाएगा 20 वोल्ट पे क्लैम्प, सॉरी कितना है 10 वोल्ट पे जाके क्लैम्प हो जाएगा. सो व्हेन वी आउट, व्हेन जीनर इज ऑन, जीनर इज ऑन मतलब इट्स अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, देन यू आर व्हेन एट 20 वोल्ट एट मैक्सिमम टू मिनिमम पावर निकालने बोला है ना. व्हेन VI इज 20 वोल्ट, IL is what?
VZ upon RL. So this will be 10 upon 1, so 10 milliampere. At Vi equals to 5 volt. IL will be what? फिर तो जीनर ब्रेकडाउन होगा नहीं ना. So current will flow like this. This I and IL will be same. So IL will be simply इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? 1 किलो ओम और 0.5 किलो ओम. So it will be 5 upon 1.5. 5 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 1.5 किलो ओम हो जाएगा. So 5 upon 1.5 कितना हो जाएगा जी? Yeah. So this is if you cancel them, it's 10 by 3 basically milliampere. This is IL max. This is IL min. So the ratio P max or P min is IL max square RL, IL min, so this will be 10 square, so this will be 9. The answer will be 9. ठीक है, clear है? Okay, good. So we have done the fill in the blanks part also. 2013 का fill in the blanks part कर लिया. अब हम लोग को फटाफट 2012, 11 ये सब करते जाना है. ठीक है, टाइम बहुत कम है. आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट टिल लास्ट डे सैटरडे, नहीं, पहले ही खत्म करवाना है मुझे. ठीक है, 2-3 दिन के अंदर. सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 2012, 2012 का हम लोग कर लेंगे. ठीक है, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.